हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन को हिट कीजिए सो दैट जब मैं नई वीडियोस लेके आता हूँ आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएं उसके। इफ यू लाइक द कंटेंट दैट आई ब्रिंग थ्रू माय चैनल, you may hit the like button. If you want to comment on my videos, please go ahead and comment on that. And if you really feel that I deliver a lot of value through my content on the videos that I bring to you, you may want to share the same with your friends, your family members, your network. Today, I'm going to be talking about a very, very important aspect of communication, both in पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटअप्स। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप कम्युनिकेट कैसे करें पर्सनल और प्रोफेशनल सेटअप्स में, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका मैसेज करेक्ट होना चाहिए, सही मैसेज होना चाहिए। सो योर मैसेज नीड्स टू बी द राइट मैसेज। Now, what do we mean by a right message? It should have a context and it should be relative to the situation in which you're delivering that message. उस मैसेज का एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए और जिस सिचुएशन में आप वो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो रिलेटिवली मैच करना चाहिए। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर कोई सीरियस मैसेज है, उस सीरियस मैसेज को आप एक फनी सिचुएशन में नहीं बता सकते। सिमिलरली, अगर कोई फनी मैसेज है तो सिचुएशन के हिसाब से आपको वो डिलीवर करना है। सो ये बहुत जरूरी है कि आपका मैसेज कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेटिव होना चाहिए। योर मैसेज शुड रिलेट टू द कॉन्टेक्स्ट। यू कैनॉट डिलीवर और शुड नॉट डिलीवर अ फनी मैसेज इन अ सीरियस सिचुएशन। सिमिलरली, यू शुड अवॉइड डिलीवरिंग अ सीरियस मैसेज when the situation is not optimal. Second most important thing is the right time for delivering any message or communicating anything, whether it be in a personal setup or a professional setup. You need to wait for the right time. You cannot talk about anything and everything at any particular given point in time. That's incorrect. That will not help you deliver the message with the amount of seriousness and the amount of impact if it's not the right time. So अगर आप सही समय पे मैसेज नहीं देते तो उस मैसेज का वेट और इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। सो आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए। ये चीज आपने पहले भी सुनी होगी, राइट? हर मैसेज का, हर काम का एक सही समय होता है, राइट? सो अगर आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, चाहे पर्सनल सेटअप में चाहे अपने प्रोफेशनल सेटअप में, सही समय का वेट कीजिए, बिकॉज हर मैसेज हर टाइम पे नहीं डिलीवर करना चाहिए। हर मैसेज हर टाइम पे नहीं डिलीवर होना भी चाहिए, बिकॉज उसकी वेटेज कम हो जाएगी और इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। सो सही समय का इंतजार कीजिए और तब अपना मैसेज डिलीवर कीजिए, या पर्सनल सेटअप में या प्रोफेशनल सेटअप में, जैसे भी उस मैसेज को आपने डिलीवर करना है। राइट प्लेस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ when you're out with your colleagues in a work environment, right, you cannot deliver personal messaging there. There may be a possibility that your colleagues may also be your friends, right? So ideally avoid mixing the two situations. So the place is very important when when you are in a professional setup, even for let's say you're in office or you've gone out for a team lunch or a team outing. Try to be as professional as possible. Do not try to mix the personal and professional setups in either of the cases. So when you're talking about when it's a personal setup, when it's a family situation that you have, or you are out with your relatives, right? Do not try to talk about your professional situations there. Similarly, in professional situations, try to avoid personal talks or try to avoid personal communication to a large extent possible. So सही प्लेस भी होनी चाहिए, सही जगह होनी चाहिए। जब आप अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ हैं या अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट के साथ हैं या कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग पे गए हैं या ऑफ साइट पे गए हैं, वहां पे
पर्सनल सिचुएशंस को डिस्कस करना या पर्सनल कम्युनिकेशन या पर्सनल चीजों के बारे में बात करना अवॉइड कीजिए टू अ लार्ज एक्सटेंट। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होंगी जहां पे आपके जो वर्क कोलीग्स हैं, आपके प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, वहां पे भी जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए पर्सनल टॉक्स को। सिमिलरली जब आप पर्सनल सेटअप्स में अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ हैं, और अपनी फैमिली के साथ कोई ओकेजन एंजॉय कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लंच पे गए हैं या कहीं भी हैं या घर पे भी हैं, वहां पे अवॉइड कीजिए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को एज मच एज पॉसिबल। ट्राई कि पर्सनल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में एक रिस्पेक्टेबल गैप हो, वो ओवरलैप ना हो। कोशिश ये कीजिए मिक्स ना हो वो। सो सही जगह बहुत जरूरी है। पर्सनल जगह पे पर्सनल मैसेजिंग होनी चाहिए और प्रोफेशनल जगह पे प्रोफेशनल मैसेजिंग होनी चाहिए। उसके बाद क्वांटिटी बहुत जरूरी है। कितना आप मैसेज देते हैं, कितनी आप बात करते हैं। ये देखिए, एक कहावत है, लेस इज मोर। जब आप कम बोलते हैं तो वो ज्यादा इम्पैक्ट देता है। अगर आप बोलते जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट और कम हो जाता है। तो क्वांटिटी सही होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने एक पर्टिकुलर मैसेज देना है और वो थोड़ा सा लंबा मैसेज है तो आप उसको भी कट शॉर्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जो मैसेज आप देना चाहते हैं एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में दीजिए, जितना जरूरी है उतना दीजिए, ज्यादा मत उसको बढ़ाइए। So when I'm talking about the right quantity of messaging, I'm not saying that you cut short the message that needs to be delivered. What I'm trying to say is that there has to be an optimal quantity of how much do you want to deliver your message or how much do you want to speak. You should not just keep on blabbering around on something, because that will basically hit the impact. It will hit the quality of the impact of the message that you want to deliver. So you also need to be very careful about the fact that how much of a certain message do you want to deliver, either in a professional setup or in your personal setup. One very important factor or determinant of communication or messaging is quality. The quality of your message, that is also very important. While we've spoken about the quantity, let's now focus on the quality. Sometimes what happens is that you're not able to compose a message with the right quality. So it's always preferable that before delivering a message, think through everything. Have you covered all the different aspects of the message that you want to deliver to your target audiences, whether it's in a professional setup or on a personal setup? Have you covered all the points? Have you, by mistake, have you not missed anything? Have you missed anything which is important, which you need to talk about? All these components make up the quality of the message. So this you need to be really careful of. You need to have a holistic message comprising each and everything that you want to deliver in your message, whether in a personal setup or a professional setup. So जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, हमें सब चीजें सोचनी है। नंबर वन, हमारा मैसेज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। क्या हम जो बात करना चाहते हैं, जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, क्या हमने सारी चीजें उसमें सोच ली हैं जो हमने बात करनी है? क्या कोई मेट्रिक है या कोई डेटा पॉइंट है या कोई स्टैटिस्टिक है जो हम इंक्लूड करना चाहिए हमें? क्या हमने वो फैक्टर इन कर लिया है? तो सोचिए, थिंक थ्रू कीजिए अपने मैसेज को बिफोर डिलीवरिंग द मैसेज, बिकॉज वहां पे क्वालिटी मैटर करती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यूजुअली प्रोफेशनल सिचुएशंस में हमारे पास कम टाइम होता है, राइट? बिकॉज आपके चाहे वर्क कोलीग्स हों, चाहे आपके बॉस हों या आपके सबॉर्डिनेट्स हों, सारा दिन आपके पास भी नहीं है और सारा टाइम उनके पास भी नहीं है कि वो आपकी बात सुने। तो आपको यहाँ पे क्वालिटी बहुत जरूरी हो जाती है कि आपने सारी चीजें अपने मैसेज में कवर कर ली हैं, सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको आपने बतानी थी अपने मैसेज के थ्रू, क्या आपने वो सारी चीजें कंसोलिडेट कर ली? आपके पास सारा मटेरियल है, उसके बाद आपने मैसेज बनाया है। ये चीजें जो हैं मैसेज क्वालिटी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती हैं। देन वी टॉकिंग अबाउट द राइट टोन। अब टोन का मतलब क्या होता है? देखिए, टोन जब मैसेज देते हैं, सो एक तो फनी टोन हो सकती है, एक सीरियस टोन हो सकती है, एक एंथुजियास्टिक टोन हो सकती है, एक बहुत डल टोन हो सकती है।
अब मैं आपसे कम्युनिकेशन के बारे में बात करूंगा, ये पूरी डल टोन है। बट अगर मैं एंथुजियास्टिक टोन में बात करूं तो मैं आपको ये बताऊंगा, देखिए आज हम कम्युनिकेशन के बारे में बहुत जरूरी चीज सीखने वाले हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल सिचुएशंस में कम्युनिकेशन में जो मैसेजिंग होती है उसके क्या कंपोनेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब हम टोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो टोन जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फनी भी हो सकती है, सीरियस भी हो सकती है, एंथुजियास्टिक भी हो सकती है, डल या बोरिंग भी हो सकती है। सो देखिए ये टोन है। तो आपको ये डिसाइड करना है जो मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं अपने पर्सनल सिचुएशन में या प्रोफेशनल सिचुएशन में, उसकी टोन आपको क्या रखनी है। Now, talking about the tone of the message, it's very important. Now, tone can be of various types. Either it can be a funny tone, it can be a serious tone, it can be an enthusiastic tone, it can be a dull or a boring tone, it can be a negative tone, it can be a positive tone. So, that is very important when you're delivering a message in your personal or professional situations, right? So when you're talking about, let's say, a good project that you were after and you've backed the project, right? So this was one project that you were you're looking for quite some time, and all of a sudden, you get an email or you get a communication from your customer or client stating that, okay, we award you this project. Now that is a time when you need to be very, very enthusiastic. You need to be proud of what you've done, right? So you can't be in the situation that you're delivering this message to your boss like, oh boss, this project, they just emailed us that the project is ours. That's a very dull tone or a boring tone, right? Your boss will be more angry, right? Or he would also be feeling a little, that's a sort of a very, very negative tone. Now you have to be enthusiastic. Hey, we got this project. This is something that we were looking for, and finally we got the email from our customer today stating that you have the project. Go ahead and execute it. That is the tone, right? So this is very important whenever you're trying to deliver a message within a personal situation or a personal setup or a professional situation or a professional setup. Pitch is very important, right? पिच इज बेसिकली लोनेस और हाईनेस ऑफ टोन, जो हम टोन के बारे में बात कर रहे थे अभी। सो उसमें हाई पिच क्या हो सकती है, जब आप थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, ये हाई पिच है। लो पिच ये होती है जब आप थोड़ा नीचे बोलते हैं, जो स्लो लो साउंड में बोलते हैं, तो ये पिच का फर्क आ जाता है, राइट? एक कंसिस्टेंट पिच होनी चाहिए, चाहे आप प्रोफेशनल मैसेजिंग के बारे में बात करें, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, पर्सनल मैसेजिंग के बारे में बात करें या पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, एक कंसिस्टेंसी ऑफ पिच होनी चाहिए। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैसेजेस आपको पिच थोड़ी हाई करनी पड़ेगी, कुछ मैसेजेस में पिच थोड़ी लो करनी पड़ेगी, राइट? अगर आप कोई अच्छी न्यूज दे रहे हैं, एक्साइटिंग न्यूज दे रहे हैं, यूजुअली हमारी, आपने पिच देखा होगा, थोड़ी हाई होती है। और जब हम कोई सैड मैसेज देते हैं या कोई मैसेज खुशी वाला नहीं होता, थोड़ा सैड मैसेज होता है, तब हमारी पिच ऑब्वियसली लो होती है, राइट? Now, when I'm talking about the pitch, there has to be a consistent volume, so to speak, or a highness or a lowness of tone while you're delivering a particular message, whether in a professional setup or a personal setup, right? Usually, you have to maintain a consistent pitch. But sometimes what happens is when we are delivering an exciting news or a happy news or something, which we were really eagerly waiting for and we are really happy about it, automatically our pitch increases. But whenever there is a sad news or something which really kind of hurts us, our pitch always goes to the lower end. Yeah. So this is something about the pitch. Volume is very important. You can't be really very, very loud. At the same time, you can't be really very, 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 very low on your volume, right? So if you're very loud, people may not want to kind of communicate with you. They want to kind of avoid you. But if you're too low, still people may not want to communicate with you. So there is a certain volume that you need to have within your communication and messaging, whether it be a personal or a professional situation. So be mindful of this fact. Most of us, we are loud. So we don't need to be loud. We need to be sufficiently loud so that we are able to communicate clearly or deliver a message clearly
whether in personal or professional communication situations. So जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, कुछ हम में से ऐसे हैं जो बहुत ऊंचा बोलते हैं, ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत स्लो, बहुत धीमा बोलते हैं। तो अगर धीमे बोलते हैं तो भी लोग आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहेंगे, बिकॉज उनकी भी गलती नहीं है, उनको शायद आपकी बात समझ नहीं आती। और अगर आप बहुत ऊंचा बोलते हैं तो भी लोग आपको थोड़ा अवॉइड करेंगे कि भाई ये हमेशा चिल्लाने वाली टोन में बात करते हैं। सो एक अपना वॉल्यूम रखिए जो कि एक मीडियोकर वॉल्यूम हो, जो एक ऑप्टिमल वॉल्यूम हो, कि इस वॉल्यूम पे मैं बात करता हूँ या मैं बात करती हूँ, राइट। वेदर इट इज, या आपका पर्सनल सिचुएशन हो, घर पे हो, या फ्रेंड्स के साथ हो, या रिलेटिव्स के साथ हो, या फैमिली मेंबर्स के साथ हो, या फिर प्रोफेशनल सिचुएशन हो जहाँ पे आपके बॉसेस हैं, आपके वर्क कोलीग्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके पीयर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं। तो ये चीज जो है आपको बहुत केयरफुल रहना है इस चीज के ऊपर, कि आपको वॉल्यूम जो है अपनी एक कंसिस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन करनी है, एक कंसिस्टेंट पिच मेंटेन करनी है, जो अभी हमने बात करी। So with this, we come to the end of this video. If you like this video and you've not done so, please go ahead and subscribe to my channel, hit the bell button so that whenever I come up with new videos, you get notified first up. If you really like this video, go and hit the like button, comment on this video. And if you want to share this video with your friends, family, and network, please go ahead and do so. Till next time, keep on honing your communication skills. Please practice communication. This is a skill which is easily learnable, but it needs to be practiced. The more you practice, the better you will become. Till next time, take care and see you soon with the next video.